तो आज की शाम मल्टी वुमेन काउंसिल के साथ आप लोग आए हमारे यहाँ पे। बहुत 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 आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंटू पाटिया पीयर सपोर्ट प्रोग्राम में पीयर एम्बेसडर एज अ पीयर एम्बेसडर काम कर रही हूँ ब्रैम्पटन से। मल्टी वुमेन काउंसिल 2009 में हमारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी बनी। इसका मेन मोटिव है एम्पावर वुमेन एम्पावर्ड कम्युनिटीज। तो ये जो प्रोग्राम है ये हमारा पहले प्रोग्राम ऑल इज वेल होलिस्टिक हेल्थ का था। तो आजकल ये हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, नया प्रोग्राम जो चल रहा है, ये हमारा है बिल्डिंग सेफर कम्युनिटी कनेक्शंस इन ब्रैम्पटन। तो उसी हवाले से आज का जो प्रोग्राम है सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी के लिए हमारे साथ हमारी पूर्वा सिंह हैं हमारे। तो वो हमारी गेस्ट है। तो वो हमारे साथ आई हैं। आपको पता है, आप लोग आपने देखा होगा कि सड़क पे चलते हुए साइकिल्स वाले भी होते हैं, हम पैदल चलने वाले भी होते हैं हमारे साथ में। हमारे जो हम ड्राइव करते हैं, गाड़ियां ड्राइव करते हैं, तो कैसे हमें उस उन सब रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है बैक होम में हम कैसे इधर से उधर, उधर से उधर निकाल लेते हैं, गाड़ियां भी निकाल लेते हैं, साइकिल भी निकाल लेते हैं, पैदल भी जो होते हैं वो गाड़ियों के बीच में से निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो लेकिन यहाँ पे हमें रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स को देखना है। और अगर ना रूल्स फॉलो करें तो हमें टिकट्स टिकट्स भी हमें बहुत सारी मिल जाती हैं। तो यही सब बताने के लिए कि हमें टिकट्स नहीं लेनी है, टिकट्स कम लेनी है, टिकट्स लेनी नहीं है। तो उसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ आज पूर्वा है कि हमें बाइकर्स के साथ कैसे चलना है, उसमें रोड पे हमें ड्राइविंग कैसे करनी है, हमें पैदल कैसे चलना है। तो उसके बारे में सब हमारी पूर्वा बताएंगी। तो पूर्वा के बताने से पहले जो मैं आज चाहती हूँ कि जी मीता जी। 274591 पता है आपको वो क्या है? सुबीहा होगी शायद। नहीं, उनका 834 से कुछ कुछ होता है ये। ये भी हमारे काफी आती हैं ये बीच अच्छा, में। ठीक। तो मैं सबसे पहले जो आजकल का जो माहौल हो रहा है, तो मुझे लगा कि उसके उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करनी बनती है कि मैं हम लोग सब शांति चाहते हैं, हम लोग सब अमन चाहते हैं। तो कोई भी जो बंदा जो है वो उस मतलब जंग नहीं चाहता, वॉर नहीं चाहता। तो उसके बारे में मैं एक छोटी सी पोम आपके साथ, सब लोगों के साथ शेयर करके उसके बाद मैं पूर्वा का इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ दूंगी। खून अपना हो या पराया हो, हेलो। हाँ। खून अपना हो या सीधी जंग पराया है। हो, नस्ले आदम ये का 5 खून है बजे है नहीं तो आखिर। कहते से। जंग मशरिक में हो या मगरिब में हो, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, बम घरों घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बात हो जाती है। फतेह जश्न का हो का हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मे शांति की जलती रहे तो बेहतर है। तो ये मेरी ऊपर वाले से बहुत दुआ है कि हमारे सबकी तरफ से कि अमन शांति बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। तो मैं उसके साथ अब हमारे साथ हमारी पूर्वा है। तो पूर्वा का जो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम सब लोग तो जानते नहीं है पूर्वा को, तो हम पहली बार मिल रहे हैं, तो उसके बारे में बताना मुझे बहुत जरूरी है। पूर्वा पैरालीगल हैं, licensed by the Law Society of Ontario, practicing and providing legal services in and around GTA. Her primary services focus on landlord and tenant board, small claims court, and traffic offenses and tickets. I
She has been working in the legal field since the last 11 years and in different capacities from working at the courthouse, a process server, and a legal assistant. She completed her education in Chandigarh, India, and pursued law when she came to India and got licensed as a paralegal in 2019. तो छोटा सा ये पूर्वा का इंट्रोडक्शन मैंने आप सबको साथ बताया, लेकिन पूर्वा खुद जो है वो हमारे साथ अपना सारा शेयर करेंगी जो उनका एक्सपीरियंस है। तो मैं पूर्वा आपको माल्टा वुमेन काउंसिल में वेलकम करती हूँ, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। तो नाउ स्टेज इज योर्स एंड माइक इज योर्स, प्लीज। Thank you, Rintu ji. Thank you, everybody. Hello, everyone. मैं पूर्वा सिंह। First of all, I would like to ask कि आप किस चीज़ में ज़्यादा comfortable होंगे? If I talk in English, हिंदी, पंजाबी, um, um, पूर्वा, मेरे को लगता है कि सब में अगर आप थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, मिक्स्ड लैंग्वेज mhm. चलेगी तो सबको आसानी रहेगी। Okay. जी। So, मेरे को पता है today, जो स्लाइड्स हैं वो तो इंग्लिश में ही होंगी, वो सब रीड mhm. कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जब एक्सप्लेन करेंगी तो वो कैसे भी। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लूं कि आप क्वेश्चन आंसर्स जो है वो साथ साथ में लेंगी कि लास्ट में लेंगी? जैसे हमने बात की थी, बिकॉज वी देर आर 3-4 टॉपिक्स जिसको या डिवाइड किया है, वो एज अ पेडेस्ट्रियन एंड या साइकिलिस्ट एंड ड्राइवर्स। तो वो जब एक पेडेस्ट्रियन एक वाला पार्ट के फिनिश बाद। होगा, तो ठीक। देन वी कैन इफ एनीबडी हैज क्वेश्चंस, वी कैन टेक क्वेश्चंस फॉर या दैट वन इन बिटवीन, एंड देन लेटर ऑन बाकी काम कर लेंगे। ठीक। तो डू आई शेयर दी स्टार्ट दी स्लाइड या एंड देन या गो बाय दैट देन? यस यस। वेलकम विजय खन्ना जी, वेलकम। सो आज हम टुडे वी गोना बी टॉकिंग अबाउट Thank रोड you. सेफ्टी Thank you all. and road safety in different capacities, as we drive, as we walk on the road, as we ride a bike. So we'll start from the pedestrian point of view first, and then I have slides to share, तो आप वो पढ़ सकते हैं, उसमें आप questions पूछ सकते हैं. I've divided it into 3 parts, which is first as a pedestrian, फिर हम जब cycle चलाते हैं as a cyclist, and then as a car driver or any kind of driver that we are on the road. So if you have any questions after we finish the first topic, and then we can have questions, and then we can go from there. ठीक है? I'll share the slides now, Rintu ji. ठीक है? ओके। यस, इट्स डन। ठीक है? चल नहीं रहा है. यस। Okay, first of all, we start from road safety. What do we mean by road safety? Like हमारे लिए ये हर एक के लिए ये कैसे रोल प्ले करता है? Road safety can be as a driver, as a pedestrian, as a passenger, as a person who rides a bike, जिसमें बच्चे भी आते हैं, youth and everyone. So road safety is very crucial for reducing traffic accidents and promoting safe road behavior. It gives us the knowledge, the skills and attitudes to be a responsible and a safe driver, a pedestrian and a passenger. It aims to ensure that all road users, including drivers, pedestrians, cyclists, and passengers, can travel safely and reach their destinations without any harm. So this includes road safety, mainly includes, like we have seen here, apne India maybe we have enforcement of, traffic laws and everything, but there are very many places where people don't listen and people don't, follow those rules. But everybody is aware कि यहाँ पे living in Canada and driving um, is what they call is, it's a privilege. It's not your right. That's what they say. Privilege इसलिए कि आपको वो सड़क पे जाने दे रहे हैं, that you
as a responsible adult or a teenager, um, or young children, जैसे आप bikes चलाते हैं बच्चे, how you use the road, it ensures that you to ensure that everybody is able to reach home with safety without any kind of accidents or any other road risks that can be involved in this. So mostly यहाँ पे अब हमारे traffic laws are very very strict, as you all know, चाहे हम drive कर रहे हैं, which includes like enforcing traffic laws, improving the road infrastructure, educating road users, and promoting responsible driving behaviors. So whenever we start any driving, हमारे को we have to go through a driving test, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि how we drive, especially even noticing the road signs and going by the speed limits and um, doing what we're supposed to do when we are driving. So first we'll go to our role as a pedestrian. What is our role as a pedestrian? अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो what are the things that we need to keep in our mind? So as a pedestrian, we need to understand the rules and rights, and most importantly, safety, which pertains to understanding how to cross the roads, cross the streets safely, using crosswalks and being aware of our surroundings. I'm sure all of you must have come across when you're driving that people cross the road not from the crosswalks, जिसको हम zebra crossing कहते हैं back in India, है ना? People jaywalk, जिसको jaywalk is where you कहीं से भी आप road cross करने की कोशिश करते हो. And there are very many instances I've seen women with the children in the trams and prams that they carry with them, वो बीच में से ही सड़क cross करके चले जाते, which is very dangerous. So if a car is coming at a certain speed, उनके लिए भी रोकना मुश्किल हो जाता है, and it's not safe to do so. And people should be, and I have seen a lot of this happening, and I'm sure आप सबने भी ये बहुत देखा होगा, people crossing wherever they want to, especially in the night time when they're wearing black colored clothes and they're not even visible to drivers. There are very many roads in Brampton area. The most that I frequent is, Queen and Kennedy area, which is people are just walking around. There are homeless people too, but then they cross the road whenever and from wherever they feel like. So it becomes a hazard for the drivers. It's of course a risk and hazard for the pedestrians who are walking on the road. So while you're crossing a street, or if you're going out in the night, it's always recommended that you wear some light colored clothing instead of something dark, where you blend in into the road and you're not even visible there. So being a pedestrian, visibility plays a crucial part, especially at night and in low light conditions. It is advisable to wear bright or reflective clothing, or use, and if you're on the bicycle, you are, recommended that you should have reflectors on the bike, or maybe use a flashlight, which, somebody can look at it from a distance and know that it's a bike. And if you're a person, and I've seen some people take precautions too. They wear those, reflective jackets on top, the ones that construction worker ही पहनते हैं. Some of them do wear that to make themselves visible so that they are safe and people are able to see them. So as a pedestrian, when you are crossing the road, especially even if it is your, right of way, when the light is, where the walk sign appears and you're able to walk to cross the road, it is always advisable to, pay attention to any cars coming in, turning right, especially turning right when you are wanting to cross, and make sure that you make an eye contact with the driver so that they have your attention that you're, crossing, and you wait for a maybe second and before you start walking, so that they don't just, randomly speed up and try to take a right turn.
which becomes which becomes very risky. And we have seen around Brampton, around GTA, we hear news every day in regards to people being hit by cars and trucks, and all the vehicles that are on the road. Um, sometimes it's not because of the drivers being in the wrong. कई बार ऐसा होता है कि भी जो अपने पेडेस्ट्रियंस ही हैं जो वॉक कर रहे हैं, they only take wrong decisions and they just try to take a hasty decision to cross the road and get into the way. So it is very important that we try to be very safe on the road while crossing the road, um, looking at the light and then taking a decision how to cross and go. So the next thing is avoid distractions. These days you must have noticed, अगर आप कार में जा रहे हो, अगर आप वॉक भी करके जा रहे हो, anybody standing on a red light, pedestrians, everybody is looking down at their phones. कोई इधर उधर नहीं देख रहा है, कानों पे अपने headphones लगाए हैं, and they're not even mindful of what is going on. And if they're wearing those headphones, sometimes maybe the sound is so loud, they don't know what is going around them. And that is another reason, major reason why accidents happen, why when pedestrians are walking and they get hit by cars or by any kind of vehicle that is on the road. So it is advisable that if you wear headphones, they should have a low volume on them. Mostly it should be avoided. You can avoid having a phone and using a phone while you're walking and crossing. आपने देखा होगा कि जो क्रॉस वॉक्स हैं, जो हमारी जीब्रा क्रॉसिंग्स हैं, अगर बच्चे भी हैं, यंग चिल्ड्रन, चाहे आजकल तो यंग एंड ओल्ड में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, एवरीबडी इज ऑन द फोन ऑल द टाइम. दे जस्ट लुकिंग डाउन, दे आर नॉट माइंडफुल आगे पीछे क्या हो रहा है. कि अगर कोई कार भी गलती से आ जाए, you're not even able to take quick decision to jump out of the way. It doesn't happen that way sometimes. So it's really advisable that we be vigilant as a pedestrian walking on the road, to see that we should not be the reason why we get hit. So the next thing I'm going to tell you about being a pedestrian and a role as a pedestrian. जब हम सोचते हैं कि भी हम वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे एवरीबडी वॉक्स विद एन एंटाइटलमेंट कि वी आर पेडेस्ट्रियंस, इनको तो रुकना ही पड़ेगा. yes, of course ड्राइवर्स को रुकना ही पड़ता है, but when it is their right of way, then you should be mindful where you are going. But if in case you have an accident and it is taken to court, which it always is, taken to court, and the court also sees कि ओके ड्राइवर का तो चलो जो है उसकी लाइबिलिटी, तो सबसे पहले लाइबिलिटी ड्राइवर पे ही आ जाती है कि देखा नहीं इसने, रोका नहीं इसने, स्लो डाउन नहीं किया, एंड ही हिट द पेडेस्ट्रियन. बट द थिंग इज दैट एज अ पेडेस्ट्रियन, इफ यू आर टेकन टू कोर्ट, दे विल नॉट जस्ट सी कि ड्राइवर का क्या फॉल्ट है, दे विल ऑल्सो सी व्हाट यू एज अ पर्सन वॉकिंग ऑन द रोड वाज डूइंग. सो it is not that you will not be held liable for that. You can also be held liable for that. So your liability as a pedestrian is that it does not give us the unconditional authority as a pedestrian that we are on the road and we have all the rights in the world कि हम कुछ मर्जी करें, the drivers will always be at fault. It is not that way. So the driver, if it is taken to court, they give their own side of the story, and when the police is involved, they actually investigate in detail what actually happened for every accident, whether it's a vehicle to vehicle, whether it's a pedestrian to vehicle, or whatever, or a bicycle to vehicle. So we need to doing so, it also required that the driver proves that the pedestrian did not act with due care for their own safety. And agar the driver is able to prove that, then the fault lies with you. And it's not that you will not be held liable for that. You will be held liable for that. So I don't know how many people are aware of this, but then जैसे drivers को tickets मिलती हैं, pedestrians can also get
tickets, traffic tickets under the Highway Traffic Act, which is the act that governs all the drivers, all the kind of vehicles that are driven on the road, चाहे वो bikes हैं, वो motor bikes हैं, या अपने trucks हैं और cars हैं. So as a pedestrian, if you can see this, I'm sure you can see the slides. So you can get fined for this. This does not come on your record, but then these tickets can be issued as penalty tickets, and they come under the Highway Traffic Act. So see, these are some of the common offenses that you can be charged for. Agar aap, if you're a pedestrian walking and you are caught by a police officer, maybe jaywalking and crossing the road on the red light, the red signal, and not on the walk signal that you have. So the first one is the pedestrian failed to use crosswalk. So if you're jaywalking, you can get a ticket, even though the fine is less. So the plus in the end represents the court costs, which are added when you are going to go and pay the fine. So it's not going to be $35. It's going to be a court cost added to it when you go and pay the fine. So पूर्वा, हाँ जी, प्रभा जी ने कुछ पूछना चाह रही हैं, वो उनका है। हाँ जी, बताएं। हाँ जी, मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे को काफी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोग मेरे हस्बैंड ज्यादातर वॉक करके ही जाते हैं। कभी कुछ शॉपिंग वॉकिंग करना होता है, पास में मार्केट है, खुद ही जाते हैं, पैदल चल कर जाते हैं। तो हमारे सामने कभी ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे हमने रोड क्रॉस करनी है, तो जो उसका जो वो लगा होता है, स्विच लगा होता है, प्रेस करना होता है, तो कभी हम उसको प्रेस करते हैं, वो ऑलरेडी दबा हुआ है, वो दबता ही नहीं। और फिर हमें पता नहीं लगता हम क्रॉस करें कि नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। वो तो लाइट लाइन आई नहीं थी, क्योंकि वो तो दब ही नहीं रहा, वो तो काम नहीं कर रहा। तो मुझे समझ में नहीं आता उस समय में क्या करना चाहिए। ओके, या तो अगर तो आपका वो जो आपको लगता है कि वो स्विच ही नहीं काम करता है, यू आर एबल टू कंप्लेन टू द सिटी एंड दे विल कम एंड फिक्स दैट थिंग, एंड दे डू टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. 1 2, अगर वो स्विच नहीं हो रहा है और आपको ग्रीन लाइट नहीं आई है, तो मोस्टली यू आर एडवाइज नॉट टू क्रॉस दैट, क्योंकि व्हेन अ ड्राइवर इज ड्राइविंग, अगर हम जब भी ड्राइव भी कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द सिग्नल्स if a pedestrian is now able to cross or not. And sometimes some cars don't stop, and then it becomes risky for you. So if it is a situation, if you're you can not cross from that side, अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो वो वाली लाइट आपके लिए वॉक साइन नहीं बना है, तो if you're able to go the other side and वहां से आगे से आप क्रॉस कर सके safely, try to do that. And I'm actually telling you, if you complain to the city, they do look into these matters. You tell them this is the intersection, this is what is happening, and we are regular walkers here, and it becomes a risk for not only you, it becomes a risk for everybody. बच्चे भी वहां से क्रॉस करते होंगे, है ना, बाइक्स पे अपना चल के जैसे भी है, and they running around thinking कि अभी हमारी इनकी red light है and we can cross because सामने green light है. Sometimes it becomes tricky, and there are cars who don't stop, which don't stop, and it becomes actually a hazard. सो आई एम जस्ट आस्किंग, सिटी का मतलब क्या, पुलिस 999? नहीं, पुलिस वाले नहीं देखेंगे, जो सिटी है, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन है ना, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन ईमेल देम एंड दे डू रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज काइंड ऑफ इश्यूज. तो अगर आप कहोगे तो आई हैव पुट इन सम लिंक्स इन द एंड, तो आप वो लिंक्स भी देख सकते हो. यू कैन ट्राई कॉन्टेक्टिंग देम. अगर आपको वहां से नहीं कुछ मिलेगा, लेट मी नो. आई कैन प्रोवाइड यू विद एन ईमेल व्हिच यू कैन ईमेल एट, and then you can go from there. I'll prefer if you will send me some contact Yeah, number. I will do. Thank you. I will do that. Hmm. So yeah, so जो common offenses है, there are others which is like disobey flashing green light, pedestrian disobey red light, pedestrian disobey amber light. ये सारी जो lights अगर हम इनको करते हैं, and if we are caught by a police officer, we can be given a ticket. So I know that there are very many people who do not know that pedestrians और जो साइकिल चलाते हैं उनको भी टिकट्स मिल सकती हैं. But believe me, I deal with traffic tickets. I get, especially for cycling, the biking tickets, I get a lot of them. And then because they take their if you have your driver's license on you at that time,
and they put it on the ticket, then it goes on your record as well. So I would suggest that next time, do not jaywalk, do not, try crossing the road from wherever you feel like. You should be very careful because it's our own safety. क्योंकि कारें तो चल रही हैं, अपनी स्पीड पे चल रही हैं, we can only stop ourselves, we cannot stop them and not come into harm's way. And it's also illegal to walk on any 400 series highways. We are not allowed to walk on highways for safety purposes, as we all know, because speed bahut hoti and we don't have any walkways on those areas, and it is totally illegal to walk on that. So this was the pedestrian slide. We're going to go to the biking and cycling rules. If anybody has any questions on our role as a pedestrian, I'm happy to answer. नहीं, आपने बहुत अच्छा इसको डिटेल में बताया. एक्चुअली नोबडी न्यू के पेडेस्ट्रियंस को भी फाइन होता है. दैट्स information to all of us. We'll take care of this next time also. Thank you. Yes. Because I have come across a lot of people जिनको नहीं पता होता, साइकिल की टिकट्स का भी नहीं पता होता. बट आजकल तो आपको पता है ई-बाइक्स भी आ गई हैं, है ना. वो देयर आर सो मेनी यंग स्टूडेंट्स एंड न्यू इमिग्रेंट्स जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो यही सब काम करते हैं, ये ऊबर रोड को भी बाइक्स एंड ऑल. तो उनको भी बहुत टिकट्स मिलती हैं. रोड को भी इन्होंने थोड़ा करके ना साइड वॉक का बना दिया हुआ है बाइक का. जी प्लस जी मेरा भी एक क्वेश्चन है. जी जैसे उन्होंने पहले क्वेश्चन किया ना सिग्नल वॉक का, वो हम लोग दबाते हैं तो रेड बटन ऊपर आ जाता है ना, तो उसका कोई फायदा है? मतलब हमारे घर वाले कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं, आप दबाओ ना दबाओ. नहीं, आप जैसे अब वहां पे रेड लाइट है तो आप जाके अगर दबाओगे ना, तो जब वो ग्रीन होगी, जो ऑनगोइंग ट्रैफिक है टू गोइंग स्ट्रेट, जहां को आप वॉक कर रहे हो, इट विल टर्न ग्रीन. अगर या वो वॉक करने वाला आए साइन तो फिर ही बंदा जा सकता है ना. हाँ जी, वो then वाइट वैसे एम बना होता है जो but person. mostly these buttons and everything, they do work. There must be some यहाँ पे खराब बहुत करते हैं चीजों को. they keep, I have seen people standing there, no patience. एक बार ही दबाया तो it will work. They just keep pressing it like 20 pressing. times in front of you, and you Yes. feel like या going and कभी telling ये them फ्लो कि ये में ना क्या एक कर रहे बार हो आप. गिरा हुआ भी था, कभी खराब हो जाते Yeah. हैं ना, गिर जाते हैं स्नो में. So पेशेंस नहीं है. जैसे वो एलिवेटर में चढ़ते हैं ना हम, तो लोगों को लगता है एलिवेटर को पता नहीं चला कि मैंने नीचे आना के ऊपर आना, वो उसके पीछे पड़ जाते हैं बटन दबाने के लिए. सो इट्स समथिंग लाइक दैट, राइट? जी बिल्कुल. जी नरेंद्र जी, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं. हमें सबसे पहले तो अपनी राइट साइड पर चलना चाहिए, ये नहीं कि हम रॉन्ग साइड पर चलें. दूसरा, वी मस्ट वेट फॉर द सिग्नल ग्रीन लाइट. हम यही सोचते हैं कि चलो अभी तो ट्रैफिक, कोई भी व्हीकल नहीं है रोड के ऊपर, चलो क्रॉस कर लें. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग एनीथिंग एंड लुक ऑल द साइड्स. और एक और बात मैंने बतानी है, वो ये कि अगर कोई साइड वॉक नहीं है, आप जहाँ पे जा रहे हो, तो आपने क्या करना है? देन यू वॉक ऑन द साइड ऑफ ऑन कमिंग ट्रैफिक. जहां से सामने से ट्रैफिक आ रहा है, आप रोड पे कॉर्नर पे चल लो, बट वो आपको देख सके कि चल के आ रहे हो. नेवर वॉक ऑन द अदर साइड जहां से वो आपको देख नहीं पा रहे, है ना. तो वॉक ऑन द साइड विच वेयर द रोड इज, द ट्रैफिक इज फेसिंग यू एंड दे आर एबल टू सी यू. So we'll move on to the riding a bicycle. Bikers, yes. Yes, for the bikers. So cyclists have the right to share roads with motor vehicles and are considered vehicles, meaning that they must follow traffic laws and they have the same rights and responsibilities as any other driver. So stopping on stop signs, red lights, yielding the right of way, and using hand signals. Cyclists can use the entire lane if necessary for safety, like avoiding obstacles or potholes. And they can ride in the center of the lane if sharing the road is unsafe. So while we are biking, so it's like I told you earlier, it's the same as driving.
you get tickets, you have to stop on the stop signs, you have to stop on the red lights, and you have to use and riding a bicycle, you need to use hand signals to tell them where we are going, right or left. In the end of this slide, I've put in a link which gives us, which will give you a PDF of your rights as a cyclist, which you can, share with your children, grandchildren, or anybody, आपके जानने वालों में who are wanting to, who have children, small children, बच्चों को सिखाने के लिए भी, that PDF is a very good link that I put in here. You can share, and it tells you everything that you need to know as riding a bicycle as a young adult or a young child. So most of the not most of the, there are very many areas जहाँ पे हमारे Brampton में, side पे there's a separate way for the for people who ride a bike. We should respect that. We should respect any person who's riding a bike on the road. And like I just said, if there are obstacles or potholes, or if it seems necessary कि हमें side पे नहीं चलाना और center में चलानी है bike, we should always be very mindful of people riding a bike in that lane. Mostly, it is recommended कि अगर if there are 2 lanes and that biker is on the right lane, you try to take, go to the left lane so that they can, move around safely. And it is safe for you too, so that you don't hit the people who ride the bike. When bike lanes are present, cyclists should use them and be aware of how they are separated from the main road. Cyclists should also avoid wearing headphones or using their electronic devices that they could. आजकल साइकिल्स पे भी ना उन्होंने, जैसे वो हम कार में माउंट करते हैं अपना सेल फोन रखने के लिए, they have put those mounting things on the bike as well. So if you're just riding a bike and on the phone and using the phone, it's the same. It's so dangerous for you to not look around and just be on the road and distracted by a phone. The same goes with the bikers, as if they put headphones, the volume should be low. They should be able to hear if somebody's honking, if there's something else going on, they should be very mindful कि क्या हो रहा है आसपास. That is what it is. You have to be alert at all times if you're on the road, as a person who walks there, who rides there, or drives any vehicle on the road. So while it is not, mandatory for adults over 18 in Ontario to wear a helmet, it is recommended that all bikers should, wear a helmet to reduce any serious injury. And we've seen, there are very many cases every day we hear on CP24 or any news that, bikers have been hit and, people don't see them. And they should also, if they're riding the bikes in the nighttime, they should also, have those headlights. There are headlights in the front, and then there are lights in the back that they put, which flash when they ride, and so that people can know, it's a bike. Otherwise, it's the same criteria as, wearing black clothes and being on the road and not being able to see them in the nighttime. So like, wait, we went to the next one. So people who bike also have the same rights and responsibilities as a driver. They cannot carry passengers. Like वो पीछे वाली सीट पे नहीं बिठा सकते किसी को. It's only meant for one person to ride. अपने इंडिया में तो एक आगे बैठा होता है डंडे पे, एक पीछे बैठा होता है ना. It is not safe. And अपने इंडिया में तो ट्रैफिक भी कितना है. It becomes really unsafe. अगर एक को लगी तो बाकी सारे भी गए ना साथ में. So, and nobody wears a helmet. We've seen people, over 18 years of age जो regular biking करते हैं यहाँ पे, they wear helmets regardless of their age. There are very many old people who like riding a bike, है ना, वो तो सब वो पहनते हैं, but there are very many who don't wear a helmet. So it's recommended कि, they wear a helmet. So same with this one, we do get traffic tickets for biking and not following the rules. So these are some of the
some of the tickets that can be issued, which is cyclists ride in crosswalk. So when cyclists are using crosswalks, the zebra crossing that we call, they are not supposed to ride and then cross. They're supposed to get down from their bikes and then cross the road because it's safer for them. And cyclists fail to stop. They don't stop for red lights. They don't stop for stop signs, which is not good because, if it's a stop sign and from the other side, the car is coming and you don't stop because that car has already been there for maybe a good 2-3 seconds, they will just come and ram into you. So that needs to be taken care of. And like I told you, I do a lot of traffic tickets, which are for these bikes as well. Mostly they are in Toronto because, there are very many students who do those Uber Eats and, skip the dishes and everything on their e-bikes. So they get a lot of tickets. And as you all know, Toronto में तो कहीं park नहीं कर सकते. There are very many restrictions. Left नहीं ले सकते, right नहीं ले सकते. And there is a special designated space for every kind of vehicle to be, stopping at that place. So bikes also come under that rule. You cannot just ride everywhere if you think. You need to be very careful what you're doing, and it's not that cycle hai kuch nahi hai sab chalta hai. It doesn't work like that. You have to be safe as if you are riding a bike anywhere. चाहे वो ब्रैम्पटन है, चाहे टोरंटो है, चाहे जहां से भी आप चलाते हैं. So children and youth, mostly, but it's all ages who ride the bike. By law, cyclists under the age of 18 must wear an approved bicycle helmet. तो जैसे हम बच्चों के लिए वो उनको कराते हैं ना आइस स्केटिंग एंड अदर स्केटिंग, उसमें हेलमेट बहुत ज़रूरी होती है. तो बाइकिंग के लिए, और वो अप्रूव्ड होनी चाहिए है, जो मार्केट से जहाँ से भी हम लेते हैं, दोज आर अप्रूव्ड हेलमेट्स. So you should wear an approved bicycle helmet. For children ages 16 and under, a parent or guardian must make sure that they wear a helmet. एक तो वैसे ही छोटे होते हैं when they're riding, and if they fall from the sidewalk to the road, and it's not very safe. So they should be wearing a helmet at all times. Cyclists must obey traffic signals where they are installed and regular traffic signals otherwise. So we've already spoken about this. They must obey all the traffic rules which apply to the drivers in general as well. Now we're going to be talking about driving our car or any vehicle that we drive, or even trucks and everything. तो अगर किसी को बाइकिंग के सिलसिले में कोई क्वेश्चन है, we can talk about it right now. I can take questions right now. अभी तक सोफा ठीक ही है. Okay. हाँ, अभी कोई Okay, नहीं. so then we move on to driving and safety on the road. So when you're behind the wheel of a car, whether alone or with passengers, driving safely should always be your top concern. We're more distracted than ever, so it's critical to know the basics of safe driving and practice them every time you're on the road in order to drive responsibly. So गाड़ियाँ तो सभी चलाते हैं, whatever age that we are, चाहे seniors हैं, चाहे young adults हैं, we all drive, but we should know that, driving, like I already said in the beginning, is not a right, it's a privilege. They've given you a privilege to drive a car on the road. And whenever, we go, जब भी मैं कोर्ट में जाती हूँ, तो trying to talk to get something good, for any traffic ticket that I'm fighting. Purva, हाँ जी. just I saw Suren's, they want to ask something. जी Okay. सुरेन जी. हाँ सुरेन जी. शायद गलती से हो गया. हेलो, या सुरेन जी, आप कुछ पूछना, you want to ask something? जी जी.
I think we have already moved आपकी to car. आपकी आवाज बहुत लो है. Am I audible better now? है तो, लेकिन स्लो आ रही है. कोई बात नहीं, पूछिए. Okay, I know we have moved to the four wheel vehicles, but like going back to the kids, um, I would like to ask if there are suggestions for the parental role, whereas the children bikes are concerned. How to inform, like how parents can educate their children, or what could be the possible role of the parents in this scenario, especially cycling, because at the end of it, either it's our family members, whether they are young or adults. So how the families, or what role the parents can play. Okay, so the role a parent can play is that, if you're teaching your young child to ride a bike on the road, agar aap bhi ride karte hain bike, you tell them, show them the ways that how safely you can, stop, turn, cross the road with you if they're very, very young. Telling them, those small rules as to first stop at the stop sign, and then, look everywhere if there is a car or anything, and if it's safe to for them to ride, then they can, cross the road. And especially like crossing road, not especially on the um, at places where there are traffic signs, but also where there are stop signs. Because कई बारी, there are four-way stop signs where there are cars coming from all sides. So children need to get down from their bikes, walk their bikes across the road, and then, ride. The safety tips, as in wearing a helmet, um, looking out for other people walking on the road, even as you are walking, riding a bike. You should also be looking out for pedestrians walking while you are riding a bike. And like I said, that I have posted a link which will give you a detail on how to, teach young children um, riding a bike, and the rules, and this kind of signals that you can teach them when they're turning right and turning left. It's all in there. I can, it's in the last slide that I've put in, and you can download. It's a PDF. You can download it, and you can, go over it with your children, and maybe, every day you can take a small little lesson from there and ask them to, inculcate in their everyday biking. And I would encourage, if you are riding with them, you show them how to be safe on the road, how to ride, and how to maybe, cross the road while taking their bike. जो पेरेंट्स करते हैं, जो पेरेंट्स करके दिखाते हैं, उससे बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी लर्न करते हैं. And yeah, they're very basic things that they need to just be told, and then they follow that. Thank you. Any other question? No. Okay. Okay, so while now we are coming to driving our vehicle that we drive on the road, we should ignore distractions while driving, and maintaining focus on the road is the key to driving safely. I always say that, जितने मर्जी साल हो जाए आपको ड्राइव करते हुए, you have to be very, very alert on the road. क्योंकि आप अगर ठीक भी चला रहे हो ना, you don't know who is driving with what kind of mindset on the road. You are safe, but then you don't know how other people drive and put you into that. So if you are really alert and vigilant, and, जितना भी कोशिश कर ले उतना करने की कोशिश करें. It doesn't matter. मुझे 15 साल हो गए जी ड्राइव करते हुए. I cannot make a mistake, and I'm not. There are very many people who come and say, oh, मेरे को तो आज तक टिकट नहीं मिली है. But then, it's good you haven't got a ticket, but then you drive safely. Maintain that, because that goes a long way for कोई भी घर से सुबह में बाहर निकलता है अपनी कार लेके, काम पे कहीं भी जा रहे हैं, we should arrive home safely, because we have so many other people connected to us, so many lives connected with us. We have a family to come back to. So it's always, be alert on the road, and
जितनी डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ में हो गई हैं, ये फोन हो गए हैं, ये और चीजें हो गई हैं ना, म्यूजिक भी चेंज करते रहते हैं हम बैठे, हम सब करते हैं, है ना, बट वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं. And yeah, be aware of what other drivers are doing around you, and expect the unexpected. Assume that other motorists will do something crazy, and you are always prepared to, avoid it and be safe. I had an incident where I had stopped at a red light. I was taking a left turn. There was a huge truck that was oncoming to where I was. उसको कुछ नहीं दिख रहा था, उसको मेरी गाड़ी भी नहीं दिख रही थी. And if I had not, looked at that person, what he was doing, maybe he was a new driver, मैंने गाड़ी रिवर्स ना की होती, he would have been on me. It was so dangerous. So I cannot forget that, because I know now, like, if it says, people are doing something crazy, it is very true. We don't know who's speeding, who's under influence, who's, in a bad mood, maybe, driving rash. तो उसने तो जो अपना नुकसान करना है, हम जो आगे गाड़ी है, हम है, आसपास की गाड़ियां हैं या लोग चला रहे हैं, they are at so much risk. People don't realize that, right? So we should always be alert and, drive thinking that, we are right, but we can be right, but then other people can make mistakes too. So you should avoid driving when you're tired. Be aware that some medications cause drowsiness and make operating a vehicle very dangerous. So अगर आपको पता है कि आप दवाइयाँ ऐसी लेते हो, या उसके बाद आपको कोई बहुत ही ज़रूरी काम आ गया दवाई लेने के बाद, that you have to, go out, ask for some help, ask someone to drive for you, ask someone to go for you, or, but then don't drive, because that becomes very dangerous for you and for anyone who's driving on the road with medications and, you know. So the Highway Traffic Act, like I told you, is the governing act which, which governs all the drivers and everybody are driving on the road. And in Ontario is a provincial law that regulates the road and road laws and vehicle licensing. It's essentially governs all aspects of driving in vehicles on Ontario highways, including defining traffic offenses, vehicle classifications. So road safety and traffic regulations. The HTA outlines rules for driving, their limits, the right-of-way signals and stopping at intersections, among other things. There are very many kinds of traffic offenses. बहुत ज़्यादा तरीके के हैं जो इन्होंने ना छोटी से छोटी चीज़ को trying to see how drivers drive and what kind of mistakes they can make on the road. It has all been outlined under the Highway Traffic Act, and जो भी हमें traffic violations वाली tickets मिलती हैं, they are all under that, mainly which is speeding, stunt driving, driving while under suspension, इनकी penalties वगैरह भी every offense is different. जितनी भी traffic tickets है सब different तरीके के offenses होते हैं, जैसे speeding का है या stunt का है, इनके सबके different charges हैं, penalties हैं, fines हैं, सब different हैं, demerit points हैं, वो भी different हैं. Enforcement and consequences. Law enforcement officers can issue tickets and penalties for violations of the HTA. HTA offenses can lead to fines, points on your driving record, and driving suspensions, and even legal action. So there are smaller traffic offenses, and then there are bigger offenses. जो छोटे offenses होते हैं उनके लिए हमें traffic tickets मिलती हैं, which are mostly they do have demerit points. Some have a lot, but then a little more serious than the traffic tickets are the summons that we get. अगर हम speeding कर रहे हैं, which is beyond the speeding limit, like if it's a posted sign of 60 kilometers per hour speed, and we are on 116 or 120, which goes almost double, they have the right to suspend your license there and then, impound your vehicle, and those
are not traffic tickets that you get. Then you get traffic summons, which are more serious in nature, which have a lot of fine and which have serious consequences than the tickets that we get. In a sense, the HT is the foundation of road safety and traffic regulation in Ontario, ensuring that everyone can travel safely and responsibly on the province's highways and on the roads. So these traffic offenses and these acts are there to, guide us, to tell us how safely we can travel on the road, what are our rights, and what rules we need to follow. Because agar rules inke nahi honge, to everybody goes, it goes chaos on the road, and we don't need that, right? We need, agar hum drive kar rahe hain, to it's we should be safe, everybody else around us should be safe as well. So I'm going to talk about some major offenses in while we're driving. So the first one is drive handheld communication device. So this one is जो हम फोन पकड़ के चलाते हैं ना गाड़ी या फोन यूज करते हैं. There are very many people who text, who are constantly on the phone, maybe watching videos, doing other things, which is very, very dangerous. It should not be done. So earlier, these offenses, handheld devices, they did not have very serious consequences. Recently, they changed the laws because people are always on their phone, and even with giving, warnings and warnings on TV and otherwise, nobody was listening. So they came down to suspending licenses if somebody's caught driving while the phone is in the hand. There are very many people who do Uber Eats, and then they are always constantly looking for directions and using devices while they are driving their car. So it's illegal to hold or use a handheld wireless communication device while driving on a highway. So there are very many inner roads. जो ब्रैम्पटन के अंदर भी जो roads है ना, highways, इन कई roads को ये उनको भी highways बोलते हैं. So it's not कि हमने 400 series है जो हमारी वही highways है. There are very many inner roads जिनको ये highways मानते हैं. जैसे ब्रैम्पटन में अब Queen Street है. Queen Street को इसको Highway 7 बोलते हैं. And Steeles है because बहुत पहले तो ये छोटे छोटे towns थे. बाद में ये बड़े बने. So it goes on like that, and then they don't really call them inner roads. It's just that I use the term inner roads, but then the inner roads as well as the highways, you should not use your phone for calling, texting, typing, emailing, or looking at videos or listening to music, constantly changing songs and doing all those things. It is not recommended that you do that. One, it's a hazard. If you're distracted, सामने car एकदम से आ गई and you did not see, you put everybody at risk of by having an accident. So if you're caught with a phone, and if it is your first offense, you get a 3-day license suspension, which is a mandatory license suspension, and 3 demerit points. अगर आप इसको fight करते हैं and the court comes down to something, then you still have a chance. But then otherwise, if you go at the face value of getting a traffic ticket for driving while holding your phone or using any wireless communication device, तो 3 दिन की suspension है. वो भी 3 दिन की तब है अगर आपका G license है. If you have a G2, it is a 30-day license suspension. और ये जो suspensions हैं, they stay on your record for more than 5-6 years. ये उतरती नहीं है. These are MTO suspensions, Ministry of Transportation वालों की, and these always stay on your record. अगर आप इंश्योरेंस, स्पेशली इंश्योरेंस गेट्स अफेक्टेड बाय दिस. अगर आपको ये ऐसी टिकट्स मिलती हैं जो बहुत सीरियस इन नेचर है, license suspension, it shows on your record, and then whenever you go for your insurance, वो कितनी देर तक शो करता है. And you know how insurance के prices, how they just elevate once you get a ticket, which is of a serious nature. So if it's the first offense, it is 3-day license suspension and 3 demerit points. If it's a second
offense और उसके बाद का कोई subsequent offense है, then you have 6 demerit points and it is a higher fine and a 7-day license suspension. And if it's a third one, then 6 demerit points and more than 30 days license suspension and up to $3,000 in fine if you're taken to court with the same fine as is. And this becomes, more serious for the novice drivers, जो G1 वाले हैं, G2 वाले हैं, M1 and M2 licenses are the motorbike licenses. So first offense के लिए ही उनको 30-day license suspension है, जैसे I told you, like G2 has 30-day license suspension, second offense 90 days, and third offense is अगर हो जाता है consequence offense, it's a cancellation of license and removal from the licensing system, and then you have to wait and then go through that अपना licensing process again if they allow you to do. तो कौन कौन यहाँ पे फोन पकड़ के चलाता है या यूज करता है फोन? हाथ खड़ा कर लिया अब, है ना? नहीं, दैट्स वेरी गुड अगर नहीं करते हैं तो. So the second serious one is speeding. So speeding offenses, तो ये जो मैं थोड़े सीरियस वाले ऑफेंसेस ही पहले मैं कर रही हूँ, वो छोटे छोटे वाले तो मैं आई लेट यू नो व्हिच वंस आर दोस, बट टू टेल यू इन शॉर्ट कि जितने ये सीरियस ऑफेंसेस हैं, व्हिच इज हैंड हेल्ड ड्राइविंग, हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन ड्राइव, स्पीडिंग, स्टंट ड्राइविंग, इनकी वजह से आपकी इंश्योरेंस ऊपर जानी जानी. स्पीडिंग का अगर है कि अगर आपका जीरो डीमेरिट पॉइंट भी है, if it's a speeding charge on your record, it will still go up, and it differs from insurance company to insurance company how they look at it. कितना वो बढ़ाते हैं, कितना नहीं बढ़ाते हैं. So demerit points, if it is आपकी speed, the posted speed is 50, आपने 65 चलाया है तो आपका demerit point कोई नहीं है. अगर वो टिकट आपके record पे आती है, it will still increase your insurance. And speeding tickets stay on your record for 3 years. If it is over 15 till 29, अगर 29 किलोमीटर over the speed limit है, 50 से 29 over हो गया, आपका हो गया 60, 70, 89 हो गया, that is 39, 79. So then you get 3 demerit points if it is 16 and above. अगर 29 and above है, which is 30 and above, 4 demerit points, and अगर 50 and above है, you get 6 demerit points, but their license gets suspended. And sometimes they impound the car at that very moment when they give you a ticket for 14 days. The consequences of accumulating demerit points. So अगर आपके 2 to 8 demerit points है on your driving record, you will receive a warning letter. 9 to 14 points है, your license will be suspended, but you're required to attend an interview with the Ministry of Transportation to discuss your record. वो पूछेंगे आपसे बिठा के आपको कि ये कैसे आपने क्यों इकट्ठे करे हैं, and what are your, what do you want to do with your driving, the way you are driving right now. So अगर 9 to 14 भी, even after the interview with the Ministry of Transportation, if they don't feel convinced that you are a responsible driver, then they suspend your license for more than 30 days. So 15 or more points, your license will be suspended automatically for 30 days. Demerit points are removed from your record after 2 years from the date of conviction. So जो conviction है, ये जो speeding वाले, ये तो 3 साल से ऊपर रहते हैं, और demerit points जो mainly छोटी tickets हैं, वो 2 years they stay on your record. और जिस दिन, जैसे आज आपकी कोर्ट डेट थी, आज आपका डिसाइड हो गया कि ओके आपके record पे ये वाला offense चल रहा है, and you've been convicted of this speeding offense, it will stay on your record from that day onwards. अगर आज जैसे 7th May है, तो अगले 3 साल तक आपके record पे वो show करेगा. Like I said, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके चाहे आपका 10 साल पुराना हो जाए, उनको दिखता है, and it is up to them to increase or not increase the insurance amounts that you are going to pay for your car every month. So the third one is stunt driving or street racing, which has become very common these days, क्योंकि the younger generation, they like speed, and they like the
adrenaline that runs in them because of what they do because of that, and then get into stunt driving charges. So once you're caught driving street racing or stunt driving, you get an immediate 30-day driver's license suspension, and आपकी कार वो impound कर लेते हैं for an immediate 14-day vehicle impoundment at the roadside, which is stored at your own expense. The police doesn't pay, nobody else pays, you get to pay that. And it's a minimum fine of $2,000 and a maximum fine of $10,000. So इसकी टिकट नहीं मिलती है, इसके summons मिलते हैं. And summons पे, when you get a summon which is mostly yellow in color, it's a yellow sheet, और उस पे फाइन नहीं लिखा होता है. टिकट्स पे फाइन्स लिखे होते हैं पर इस पे फाइन नहीं लिखा होता है. This the court decides आपको कितना फाइन दे. The judge decides how much fine is going to be imposed on you. And if it's a repeated offense, you can even get a jail term for stunt driving, which is which has a high bar. जिसको कह लो high bar, meaning it has if you've done stunt driving like getting one consecutive summon after the other, then they may order a jail term of 6 months for you, which is the Highway Traffic Act के under these are not counted as criminal charges. जो ये हमें tickets मिलती हैं, ये criminal charges नहीं होते हैं. But then if you are sent to jail for an offense which they feel you are a hazard on the road, सबके लिए safety concern हो, then they can do that. So post conviction license suspension of, अगर आपको stunt driving के लिए as is आपको convict कर देते हैं, तो you have a minimum of 1 year and a maximum of 3 years for the first conviction. आपकी license suspend होने के लिए it's up to the judge to decide 1 year to 3 years maximum for the first conviction. A minimum of 3 years and a maximum of 10 years for the second. A lifetime suspension अगर उनको लगे कि ये तो this person is not learning, doing what they want to do day after day, and every time they come to the court they come with something serious in nature, that's when this is done. And you get 6 demerit points, a mandatory driver improvement course upon conviction. So in very serious offenses, आपको court जो है, they give out a conditional sentence, not a sentence, but they give you conditions in regards to what you need to do if you've been a repeated offender. They tell you to go through a driver improvement course, जो कि जैसे ये हम जहाँ से driving courses लेते हैं, वहाँ पे ही वो there are other courses जो हम कोर्ट को ये दिखाने के लिए कि we're doing it in good faith, that we will be good drivers on the road moving forward. Those kind of courses can be done so that the court can see if you actually mean what you say कि हमने जी from now on we'll be very careful and we'll be driving as a responsible driver on the road. Drivers convicted of aggressive, careless, or stunt driving will experience a substantial increase in their insurance rates or could become uninsurable. When you have so many serious offenses on your record, आपको कोई भी insurance company जो है insurance नहीं देती है. It becomes very difficult to obtain insurance. I have had young drivers जिनको stunt driving one after the other मिली. 3, I had one guy who had 3 of them, and उसके बाद उसको suspension में भी he drove. तो उसको कहीं से भी insurance नहीं मिल रही थी. जो कोई दे रहा था उसको insurance, they said कि $1,500 a month you will have to pay for insurance to drive your car. So it becomes very difficult if you get into something like this. It's highly recommended that we go by the speed limits posted on the road. अगर हम 50 की zone में चला रहे हैं तो अगर आप 10 ऊपर चले जाते हो, still it's okay. But going beyond that, there are some police officers which they stop you even if you go 10 above, even though it doesn't have if they give you a ticket, it comes on a record, but then sometimes they leave you with a warning as well कि अगर
आज आपको हमने पकड़ा and we let you go with a warning. Next time we will not leave you. So if a police officer says that, आपको आज warning दे दी है, next time मत करना, they put it in their record for you कि इनको warning मिली थी. So next time you are speeding, they will for sure, refer to the notes and the information they put into their system. तो आपको उसको वो second offense मान के then they will give you a speeding ticket. The next one is careless driving. Careless driving mostly, it's not a stunt driving or a speed racing or street racing. Careless driving mostly people get when they have taken maybe a wrong or unsafe left turn and have gotten into an accident. And दोनों उस तरफ से किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, but then careless driving ticket has 6 demerit points and they can also suspend your license. So that's why it's very important कि अगर आप कहीं left turns ले रहे हो, कहीं रात को भी drive कर रहे हो, and you think it's very easy to maneuver through traffic signals and do what you want to do, and आगे जाके you get hit into another car which was actually driving right, then you get these kind of tickets. And mostly with these small accidents, not small accidents, with accidents you mostly get careless driving tickets if you are at fault and the police officer thinks that it could have been avoided and you did not do what you were supposed to do. So if you're convicted of a careless driving causing bodily harm, then you can face more severe charges. But if it's just um, it did not have a much impact, but then it still hit another vehicle, it has a little less impact as driving when you're causing bodily harm to another person. क्योंकि अगर आप किसी को hit कर रहे हो and then somebody has been harmed because of you, उसको चोट लग गई है या उसको he has had a sudden jerk and faced health issues later on, then it comes on your insurance. As you all are very well aware ki, then they go through insurance, you get a careless driving ticket as well as you have to go through the insurance process anyway. And with careless driving, you have 6 demerit points, a maximum of 6 months in jail if the judge decides it should be given a jail time, a driver's license suspension of up to 2 years if you are convicted as is, and if it's bodily harm, it's a maximum of 2 years in jail. Courts can impose a driver's license suspension for up to 5 years and a mandatory driver improvement course upon conviction. So like I told you, restrictions लगा देते हैं, जैसे हम there are people who drive under influence, which is drinking and driving. If the court comes down to something, they become a little lenient and give you a lesser charge in driving under influence अगर आपने ज़्यादा नहीं पी हुई है, and they come down to something. They also give out a lot of restrictions as to how you can drive. The same goes with this. They give you restrictions like you have to go through a driver improvement course to come back to driving on the road. So we have to be very careful when we are on the road, how we are, even if it is, हम सोचते हैं रात का टाइम है, खाली सड़कें हैं, we can drive as we want, and that is when people speed a lot, and people, police officers are always hiding in one corner or the other, gauging your speed and trying to see if somebody's driving not the way they're supposed to drive. And with speeding tickets, I have to tell you one more thing, कि अगर हम कोर्ट जाते हैं विद स्पीडिंग ऑफेंस कि हम सोचते हैं कि नहीं, हम तो अपनी स्पीड लड़ लेंगे, कि हम तो स्पीड पे ही नहीं थे जो ये स्पीड ऑफिसर ने बताई है. I should tell you that speeding offenses are known as strict liability offenses, जिसका मतलब है कि
we are not only up against a police officer जिसने अपनी notes लिखे हैं, गवाही देनी है अपनी, but we are also up against a device जिसने आपकी speed note करी, which अगर आप कहीं भी देखोगे आपको वो रोकते हैं. They have that handheld device जिसको कहते हैं which is a radar and a lidar. There are two kinds of devices that they use, or which measures their speed, which measures the speed. और अगर आप 10 कारों में आपकी कार तेज चल रही है, वो आप ही की कार को पकड़ेंगे. These devices are made such that they can, you know, अगर 15-20 कारें भी हैं उनमें से भी वो ढूंढ लेंगे कौन सा जो है ना वो गाड़ी तेज चला रहा है और किसकी स्पीड कितनी है. So even if you go to court and you think कि भी हाँ हम अपने आप लड़ रहे हैं टिकट and मैं तो इतनी स्पीड पे नहीं था, मेरे को तो 100% पता है, but you should know that we are up against two things. One is the police officer who did take the device in his hand and, you know, measured your speed, and the other one is a device which they test before even standing there and you know, stopping you कि आपकी कार ऐसी है. And they provide, court में they provide their documentation in regards to हमने ये device check किया था, it was in working condition and it was perfectly fine, and this is the speed that it had recorded. हाँ पूर्वा. हाँ जी. कमलजीत जी ने कुछ पूछना. हाँ जी, मैंने देख लिया. जी जी. Thank you, Tuji. Purva ji, it's a very heavy lecture. In fact, we are listening it. It's a very quite informative also. But I have a question. When you are driving and there is a rush on the road, but आपके आगे भी कई गाड़ियां हैं, पीछे भी गाड़ियां हैं, लेकिन जब आपने जो आगे वाली गाड़ी है, 2 गाड़ी हैं या 3 गाड़ी हैं, वो ग्रीन लाइट जब हो रही है क्रॉसिंग पे, तो वो क्रॉस कर रही हैं, लेकिन आप इमीडिएटली उसके पीछे हो. मैं ये कंक्रीट बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ इंडिया में. तो लेकिन एकदम से जो 2-3 गाड़ियां आगे थी, रो में चल रही थी, उसको कोई ब्रेकडाउन आ गया या रश की वजह से वो स्लो डाउन हो गई. और बाय दैट टाइम, जैसे कि मेरे आगे एक मिलिट्री ट्रक था, तो वो काफी हैवी था, चल रहा था, लेकिन बाय द टाइम मैंने जब क्रॉस किया, वो येलो से क्रॉस कर गया. मैं जब क्रॉस की तो रेड लाइट आ गई, तो ट्रैफिक पुलिस ने मुझे रोक लिया. तो उसमें मैं भी जल्दी में थी. मैंने उसको कहा कि दिस इज नॉट माय फॉल्ट, मेरे आगे जो गाड़ी थी वो स्लो डाउन होगी, तो मैं क्रॉसिंग में फंस गई. जब बाय द टाइम मैंने क्रॉस किया तो रेड है, मैं कह रही हूँ, लेकिन दिस इज नॉट माय फॉल्ट. देन इन दैट केस हाउ वी शुड डू एंड हाउ वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. तो आप मुझे ये बताओ, जब आप रुके हो, तो जब आप क्रॉस करने लगे थे, तो आप वर यू इन द मिडल ऑफ द इंटरसेक्शन के नहीं? आई वॉज इन द मिडल ऑफ, क्योंकि मैं फॉलो कर रही थी उन्हीं गाड़ियों को. आई एंटर्ड द क्रॉसिंग वाइल देयर वाज ग्रीन लाइट. तो आगे आगे चल रही हैं सारी, है ना. तो आगे जाके वो गाड़ियां रुक गई, तो मैं तो बीच में हूँ ना, तो मैं पीछे तो जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर येलो लाइट हो भी गई, पीछे तो मैं जाऊंगी नहीं है ना. तो पीछे चाहे खाली है, मैं पीछे नहीं जाऊंगी, मैं आगे ही प्रोसीड करूंगी. लेकिन बाय दैट टाइम मैं वो क्रॉस किया तो रेड हो गई. तो कहता है नो एक्सक्यूज. तो आपके आगे ट्रक था जो आपको लाइट नहीं दिख रही? नहीं, लाइट भी दिख रही थी, लेकिन मेरे आगे मिलिट्री ट्रक था जो कि बहुत बड़ा था. आई वॉज इन माई कार, है ना. तो वो स्लो डाउन हो गया क्योंकि उसके आगे कोई गाड़ी स्लो डाउन हो गई थी, है ना. तो आपने पुलिस ऑफिसर को बताया? तो आपने पुलिस ऑफिसर को बताया नहीं था कि दिस इज व्हाट हैड हैपेंड, इट वाज नॉट माय फॉल्ट एंड आई वाज सपोज्ड टू क्लियर द इंटरसेक्शन? आई प्लेडेड माय केस, लेकिन कहता है नहीं जी, खड़ूस था वो. But sometimes they do give you tickets like that, but अगर आप कोर्ट जाते हो, see this is not a speeding ticket. जैसे मैं स्पीडिंग टिकट की बात कर रही थी ना, कि वो तो आप 2 चीजों के अगेंस्ट हो, बट देन जो ऐसे होता है, you can go and tell the judge कि मेरी ये सिचुएशन थी, I was not at fault, I was in the middle of the intersection and I had to cross and I could not go back. तो sorry to interrupt.
वो तो जस्टिफिकेशन हो गई ना कि उसने मेरा चालान काट दिया। इंडिया में चालान बोलते हैं, है ना। वो कहता है कि मैं तो काटूंगा ही, लेकिन आई वाज इन हरी, तो मैंने कहा अच्छा नहीं, मैं हार्ट पे नहीं। इट इज लेकिन ऑलवेज एडवाइजेबल दैट इफ यू आर इन द, अगर आप इंटरसेक्शन के उस पार्ट तक पहुंच गए हो जहां पे पीछे जाना भी मुश्किल है, दिस इज व्हाट दे एक्चुअली टीच यू इन ड्राइविंग एज वेल, कि जब हम ड्राइविंग का टेस्ट भी देते हैं कि यू नीड टू क्लियर द इंटरसेक्शन, यू कैन नॉट बी इन द मिडल। सो इट वाज योर, आपको क्लियर करना ही पड़ना था, यू कुड नॉट हैव गॉन बैक, राइट। अगर तो आप क्रॉस वॉक पे थे, फिर तो आप, फिर आपने रेड पे क्रॉस किए, देन आपको उसको टिकट देना बनता था। बट अगर आप क्रॉस वॉक से आगे थे, देन इट वाज बियॉन्ड द पॉइंट वेयर यू कुड हैव गॉन बैक। क्योंकि आई हैव सीन कार्स जो क्रॉस वॉक पे खड़ी होती हैं, रेड लाइट ऑन हो जाती है, एंड देन द रिवर्स, दे गो बैक, ठीक है ना। बट देन इफ यू वर, आप क्रॉस वॉक को अपना वो मीडियन रखें, अगर आप क्रॉस वॉक से आगे थे, तो दैट मीन्स यू वर इन द मिडल ऑफ द इंटरसेक्शन एंड यू हैड टू क्लियर। अगर दैट वाज नॉट द थिंग, अगर आप दिस क्रॉस वॉक के ऊपर थे एंड देन यू क्रॉस्ड अ रेड लाइट, एंड आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, आगे पुलिस वाले खड़े थे, देन दे गिव यू टिकट। अदरवाइज पीपल डू दैट मेनी टाइम्स, कि अगर क्रॉस वॉक पे भी है, दे स्पीड अप एंड दे क्रॉस, विच शुड नॉट बी डन, विच इज अनसेफ। क्योंकि रेड हो गई, आपको पता है दूसरी साइड से भी देयर आर पीपल हु आर इम्पेशेंट एंड वांटिंग टू ड्राइव, दे या जस्ट कम एंड हिट यू, राइट। यस तो यस यू शुड ऑलवेज कीप योर रेफरेंस पॉइंट एज द क्रॉस वॉक, कि अगर आप उस पे खड़े हो तो कोशिश करो कि पीछे चले जाओ, ठीक, या है ना। तो फिर अगर क्रॉस वॉक से आगे चलोगे, दैट मीन्स यूर इन द मिडल ऑफ द इंटरसेक्शन, देन यू नीड टू क्लियर दैट। अगर आप उस पोजीशन में थे फिर उसने टिकट दिए, तो देन इट वाज रॉन्ग, इट वाज रॉन्ग। ठीक है ना। थैंक यू। ये So yeah, I understand बहुत ज़्यादा information है, but you know, I just wanted to cover जो काफ़ी main offenses हैं, which is speeding, careless driving, stunt driving, सबसे बड़ा जो है वो है device वाला, जो हम फोन हाथ में लेके चलते हैं या टेक्स्ट करते हैं। There are very many people जो you know, आप रेड लाइट पे खड़े हो, everybody is looking down, they are on their phones, there is no other way to look down, and there is no other way to do it, but then that is very wrong and distracted, and आजकल तो इसको बहुत ज्यादा पुलिस is they're looking into catching people, कि they should not be doing this, because one distraction and it's done for everybody around, for yourself as well, right. So you have to be very, very careful. So like I've already spoken about the insurance one, the insurance is जो demerit points है, mostly they won't directly increase your insurance, but it depends आपको offenses कौन से मिले हैं। अगर आपको speeding मिले, जो मोटे मोटे charges हैं, आपको बहुत ज्यादा demerit points इकट्ठे हो गए हैं, most of the insurance companies look at that and then they increase your insurance according to that. Convictions उनके लिए इतनी मैटर नहीं करती, but then they go by the record, आपकी 4-5 टिकटें हुई हैं, 2-3 पॉइंट्स भी इकट्ठे हुए हुए हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज डू लुक एट इट, कि भी ये दिस इज a repeated offender, जिसको ट्रैफिक टिकट्स इतनी मिलती है, they're not mindful, and insurance companies increase their insurance amounts substantially. ये जो जितनी स्पीडिंग वाली हैं, स्टंट वाली हैं, careless driving, handheld devices, ये सबके insurances, they just skyrocket. Like I told you, this guy that I just dealt with, $1,500 सिर्फ उसकी मंथ की, and he's a student. तो अभी बताओ कितना वो कमा रहा होगा, कितना रेंट में दे रहा होगा, 1,500 की अब वो इंश्योरेंस लेगा, तो वो how is he going to survive? It is so difficult to do that in these days. So common offenses that we get traffic tickets for, it's distracted driving, which is, we've already spoken about this. अगर हम मेकअप भी लगा रहे हैं, लिपस्टिक भी लगा रहे हैं ना, और खाते जा रहे हैं साथ में, that is also distracted driving. And I know we all women, we all do it at some point or the other, कि आज लिपस्टिक लगा, मैं फटाफट से लगा लेते, रेड लाइट हो गई है, तो अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, देख लिया, उसने टिकट दे देनी है डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग की। And then failing to stop at a red light or stop sign, which is a must, है ना। कई रेड लाइट कैमरा टिकट्स होती हैं, which I will tell you कि अगर आपको
इंटरसेक्शन पे क्रॉस करते हैं, घर पे रेड लाइट की टिकट आ जाती है, एंड इट्स अ फोटो टिकट। उसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसमें फाइन होता है, आई थिंक $325 है उसका फाइन टोटल, बट दैट डज नॉट गो ऑन योर रिकॉर्ड, उसका कोई डीमेरिट पॉइंट नहीं होता। यू कैन पे दैट, यू कैन इवन गो टू कोर्ट एंड टॉक टू देम कि इसके पैसे कम कर दो, थोड़े से कम कर देते हैं वो। सो जो रेड लाइट की फोटो टिकट्स है, दैट वन यू कैन इट डजंट कम ऑन योर रिकॉर्ड। स्टॉप साइंस है, ऑलवेज स्टॉप साइन, डिसोबे साइन जो है वो इसी की टिकट्स मिलती हैं, दैट हम शुरू शुरू में जब ड्राइविंग शुरू करते हैं तो वही जो 3 सेकंड काउंट करके हमने स्टॉप साइन पे रुकना होता है तब करते हैं, अदरवाइज तो वी ऑल गो रोलिंग, है ना। तो हमें होता है कि कोई खड़ा तो है नहीं है, चलो लेट्स डू दैट, बट यू शुड डू दैट, क्योंकि अगर जैसे फोर वे स्टॉप साइन है, वी शुड बी माइंडफुल किसकी बारी है किसके नहीं। आजकल आई हैव सीन सो मच, आपने भी देखा होगा ब्रैम्पटन का ट्रैफिक कैसा हो गया है, हाउ पीपल ड्राइव ऑन द रोड। अगर राइट लेन में खड़े हैं, देन दे सडनली थिंक कि भी हाँ हमने तो लेफ्ट जाना था, एंड दे सडनली टर्न एंड गो लेफ्ट। अगर स्टॉप साइंस पे खड़े हैं, देर आर सम पीपल हु आर नॉट माइंडफुल कि कौन पहले आया कौन नहीं आया, एंड दे जस्ट रश थ्रू द लाइट्स, द स्टॉप साइंस। So that should not be done. It becomes unsafe when we do that. Driving without insurance. So driving without insurance also becomes a bigger offense. अगर हमारे पास इंश्योरेंस है और हमने अपना इंश्योरेंस कार्ड नहीं पुलिस को दिखाया, if we are stopped by a police officer, तो then it becomes a problem. आपको ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस की टिकट मिलती है, यू गो टू कोर्ट एंड अपना दिखा दो, अगर आप कि भी नहीं जी हमारे पास वैलिड इंश्योरेंस थी एट द टाइम आई गॉट द टिकट, देन यू हैव अ वे टू एस्केप इट। बट इफ यू ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस, एक्चुअली विदाउट इंश्योरेंस, आपका फर्स्ट जो ऑफेंस है 5,000 प्लस जो है फाइन है, एंड इट स्टेज ऑन योर रिकॉर्ड। एंड अगर सेकंड कंसेक्यूटिव आपका ट्रैफिक टिकट मिल जाती है आपको ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस की, इट इज $10,000 इन फाइन। सो अगर आपके पास इंश्योरेंस है, आजकल तो वो फोन पे भी दिखा दो तो मान जाते हैं कि भैया यू हैव अ वैलिड इंश्योरेंस, बिकॉज दे चेक द इंश्योरेंस देन। बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप योर पिंक स्लिप्स विद यू इन योर, one in your car, one in your wallet, and if you don't have that, I'll keep it handy in your phone, कि अगर कोई रोक लेता है तो you are able to show them that you have a valid insurance. ड्राइविंग वाइल सस्पेंडेड, अगर आपको लाइसेंस आपका ड्राइवर्स लाइसेंस आपका सस्पेंड हुआ है फॉर एनी ABC रीजन, कि आपने स्पीडिंग करी थी, स्टंट ड्राइविंग करी थी, एंड उसके बाद आपको अंडर सस्पेंशन आपने गाड़ी चला ली है, इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी बिग ऑफेंस which you should not be doing unless and not even unless and until I had a client जिसकी 1 month की सस्पेंशन थी because of speeding, and उसको 1 दिन रह गया था उसकी सस्पेंशन खत्म होने के लिए, तो रात को ही ड्रोव एंड ही गॉट अ टिकट फॉर ड्राइविंग व्हाइल अंडर सस्पेंशन। सो उसकी टिकट तो वी कुड फाइट एंड वी कुड गिव देम अ जेन्युइन रीजन कि ही डिड नॉट कैलकुलेट द डेज, ही थॉट कि भी इसका खत्म हो गया हुआ है, एंड देन वी कुड डील विद दैट, अदरवाइज इट्स अ बिग ऑफेंस टू ड्राइव व्हाइल अंडर सस्पेंशन। Another serious one is failing to remain at an accident scene. तो अगर कहीं आपसे हल्की सी भी लग गई है किसी के साथ कार, तो आप रुके नहीं हो, it's a big one. Leaving the scene of an accident before providing assistance or exchanging information with the other party. एक तो एक्सीडेंट कर लिया, अगर आपका फॉल्ट था, एक तो टिकट उसकी भी मिलेगी, फिर आपको फेल टू रिमेन एट द सीन भी मिलेगा, एंड इट विल बी अ बिगर चार्ज. Improper passing of a school bus. So we all know that school buses, if they're flashing those red lights, that means they're stopped and children are getting into the bus. We should always stop, wait for the bus to stop flashing those lights and move on the road, and then we should be going. So these are some of the they are also serious, but they're not of the other kind of offenses that we discussed earlier. तो ड्राइविंग में और ये जो आपने ट्रैफिक टिकट्स के मामले में, if anybody has any questions, I can take them right now. Next one is we are going on school zones and the smaller topics.
जी मीता जी। So I have a question regarding car seat for kids. Mhm. How much is the fine? And I mean, of course, we know what is the age and what is required. Suppose the kid is not, sometimes kids become very cranky, they don't want to sit in the car seat. Then how much is the fine? I think I just did one, I think a month back. They had two children, दो बच्चे थे उनके, दोनों को इसी रीजन से बच्चे पहनना नहीं चाह रहे हैं, ये करना नहीं चाह रहे हैं, दोनों को ना प्रॉपरली बेल्ट नहीं किया हुआ था, and they got two different tickets, and I went to court and they said कि I said you gave, I tried to go around it and say कि भी एक टिकट मिलनी चाहिए थी इसकी तो, then he says दो बच्चे थे, दो कार सीट्स थी, दोनों की ही बेल्ट्स नहीं लगी हुई थी. So I think it's two demerit points for not having the car seats fastened, because अगर एक्सीडेंट होता है तो हम तो चलो किसी तरह, अगर even if it's a small impact, हम तो फिर अपने आप को किसी तरीके से संभाल लेंगे. Those are small children in the back, right? और अगर if they're not with their seat belts properly, where are they going to go, right? वो तो सीधे कुछ और ही होगा. I can look up the fines for that and I can let you know. But it does have demerit points, because I think my client got 2 for 1, I think 4 demerit points for 2 tickets. And he had other tickets too, so they did not budge. They said कि हम बाकी tickets का तो कुछ कर लेंगे, ये बच्चों वाली का तो कुछ नहीं करेंगे. It's नहीं very करेंगे. serious. So Fine. car seats need to be, बच्चों की सीटें जो हैं, बच्चों की नहीं इसमें सुननी है, because आप रोड पे लेके जा रहे हो. अगर आप, like I told you in the beginning, हम जितनी मर्जी सेफ चला लें, we have control on ourselves. We don't have control on people who drive on the road, right? So अगर छोटा सा भी impact होता है, it's going to be a huge impact for the children, right? And I also want to share one more thing. I know a boy, he was caught in a case of drunk driving. Oh, I mean, actually, his liquor was much, much beyond the limit. And he was driving, and naturally, he was speeding also. So he got both the tickets, and his license has been suspended. Mhm. And what I gather from what I have been told is that उसको उन्होंने ये कहा है, जो उसके जानकार लोग हैं, कि कोई अभी तो कोर्ट में जाना है ना, कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा, तो हम 10 महीने तक या 1 साल तक कोर्ट की डेट को आगे 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 कर सकते हैं, तब तक तू चलाता रहे गाड़ी और सब काम करता रहे. तो ये तो नहीं, पर अगर उसका लाइसेंस अगर सस्पेंडेड है, वो तो गाड़ी चला ही नहीं सकता. लाइसेंस ही सस्पेंड हुआ उसका, हाँ, तभी तो फिर कोर्ट में अगर उसको सी जाना द थिंग पड़ेगा. इज कि ये जितने पुलिस की व्हीकल्स हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं, जा रही होती है ना हमारे आसपास, दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग राइट देयर. अगर वो हमारे पीछे भी है या साइड पे भी है ना, दे कैन पुट इन एनी लाइसेंस प्लेट एंड दे कैन लुक अप व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम. तो अगर वो पकड़ा गया, इज ऑलरेडी सस्पेंडेड ड्राइविंग अंडर influence, which is not good, which is a criminal record, which is not even a highway traffic comes under Highway Traffic Act. And if it was like you said, it was the alcohol in his bloodstream was much high, that means he must have had much more restrictions than that. So अगर हाँ, there are very many people who practice this कि हम court dates आगे करा देंगे. If it is a legit reason, then you can do that. But the thing is, we are wasting court's time, right? Every time we're going to the court and asking Yes. for an adjournment, or making whatever reason we put there, हम कोर्ट प्रोसेस को अब्यूज कर रहे हैं, बिकॉज देर आर वेरी मेनी पीपल आउट देयर जिनको अभी कोर्ट डेट्स की हियरिंग्स नहीं मिलती हैं बिकॉज ऑफ दैट. एंड at the end we are also paying taxes and working the court system. या वो And तो है ही है. और yeah. उसको एक्चुअली हमें जो समझ में आया, तो हमने तो यही जो इंटरनेट पे देखा था, तो हमने तो यही कहा कि ये तो डिपोर्ट हो जाएगा. तो उसने कहा कि 1 साल तक चलो ड्राइव ना भी कर रहा हो, तो 1 साल तक तू टिक सकता है, तेरी हम कोर्ट डेट आगे की आगे करते रहेंगे, तो काम करी जा और वो इसमें टिकर है. तो वो ये, 1 साल के बाद भी तो डिपोर्ट ही होगा. हाँ हाँ, अगर वो तो है अगर ही है. आप वर्क परमिट पे हो, अगर आप पीआर पे भी हो ना, and you get a charge under the criminal code, which is ड्राइविंग, even driving under हाँ, influence, ड्राइविंग चाहे ड्राइविंग. थोड़ी है चाहे ज्यादा है,
अगर तो बहुत थोड़ी है, दे ट्राई टू कम डाउन टू, उसको वो ट्रैफिक ऑफेंस में क्या कहते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। बट Okay. दैट्स इन वेरी रेयर केसेस जहाँ पे उनको लगे कि भी पहले फर्स्ट ऑफेंस है, बहुत कम जो है ना अल्कोहल का लेवल ब्लड में था, एंड देन दे कम डाउन टू, उसको फिर वो ट्रैफिक टिकट देते हैं केयरलेस ड्राइविंग की, जो कि आती है 6 डिमेरिट पॉइंट्स के साथ। ठीक है, स्टिल इट कम्स ऑन योर रिकॉर्ड, बट यू गेट सेव्ड फ्रॉम द क्रिमिनल रिकॉर्ड। बट अगर आप वर्क परमिट पे हो, पीआर हो, वर्क परमिट पे हो तो पीआर नहीं होनी, पीआर हो तो सिटीजनशिप नहीं होनी है। तो वो चाहे साल डिले कर ले, चाहे 2 साल डिले कर ले, अगर उन्होंने उसको डिपोर्ट करना है ना, तो उन्होंने वो 2 साल के बाद भी कर देना, इट डजेंट मैटर। That's good. या मैं तो कहती हूँ पहले ही कर देना चाहिए। नहीं, वो ऐसे होता है ना, एवरीथिंग गोज ऑन होल्ड। अगर तो बहुत सीरियसली जैसे ड्राइव करके अंडर इन्फ्लुएंस दे हैड एन एक्सीडेंट, ऊपर से ओवर स्पीड भी कर रहे थे, 2-3 चीजें इकट्ठी होगी ना, तो देन दे डोंट कम डाउन टू समथिंग स्मॉल, देन दे कम डाउन टू दिस। अगर वो अगर वो साल के लिए, मोस्टली जो ये ड्राइविंग वाले हैं ना, ये साल के लिए इनका सस्पेंड होता ही होता है लाइसेंस। और अगर इनको चलाने के लिए भी देते हैं, देयर इज अ डिवाइस दैट दे पुट ऑन टू दी व्हील, कि जो एवरी मॉर्निंग आपने गाड़ी वो स्टार्ट करनी है ना, जब भी गाड़ी स्टार्ट करके जाना है, रात को भी कहीं जा रहे हो, तो आपको पहले उसमें फूक मारनी होगी, एंड देन वो रिकॉर्ड करेगा क्या है, फिर वो चलेगा। ये है। So it's not very simple. The code gives you like all the restrictions and all the conditions that you can drive with them. अगर आप ड्राइव कर सकते हो, तो it's not very easy. I तो know. यहाँ पे मैं तो कहती हूँ क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना बहुत इजी है, थोड़ी सी पी लो और बस बन गया, खत्म हो गया, and it stays on your record. It's not very good. So it's highly recommended that you do not drink and drive. Drive. Yeah. Right? Thank you. Yeah, no worries. Yeah. So ये वाला हमारा हो गया. Anybody has any other questions regarding traffic tickets and other things? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है। आजकल रश भी बहुत क्राउड हो रहा है, मतलब रोड्स हाँ पे जी। सारे बाइक्स नहीं जी, वगैरह। ब्रैम्पटन में ट्रैफिक तो चलो हो ही गया बहुत है, बट आई टोरंटो में बहुत है हाँ जी, कंस्ट्रक्शन और ये बड़ा। कंस्ट्रक्शन अपने ये क्वीन स्ट्रीट पे देखो, पूरी क्वीन स्ट्रीट बंद है अब, विलियम्स अच्छा। पार्क पे भी आधी बंद है। हाँ, नहीं तो So पता नहीं। much and people drive हाँ, crazy still, ये कंस्ट्रक्शन के वो भी नहीं देखते हैं। Good you pointed out construction. If we are driving on where construction is happening, अगर उन्होंने कोई साइन पोस्ट किया कि आपने इतनी स्पीड पे जाना है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उतनी स्पीड पे ही जाएं। अगर 40 है, 50 है, प्लीज स्टिक टू दैट। कैमरे लगे होते हैं, जगह जगह पुलिस वाले छुपे होते हैं गाड़ियों हाँ में, जी पता नहीं। बिल्कुल। एंड ये जो कम्युनिटी सेफ्टी जोन्स हैं या जो जोन्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दे हैव जीरो टॉलरेंस इन गिविंग टिकट्स, और वी शुड कंप्लाई टू वट एवर साइंस दे हैव पोस्टेड कि अगर 40 की लिखी है स्पीड, वी स्टे ऑन दैट। वी डोंट वी डोंट वांट टू गेट टिकट्स एंड स्पॉइल आवर रिकॉर्ड फॉर दैट, राइट? जी करमजीत जी। थैंक यू। मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? जी जी जी। हाँ जी, मेरे को ये पूछना है। मेरे को 5-6 साल पहले एक टिकट मिली थी, वो राइट टर्न नहीं करनी थी वो रेड लाइट पे, तो मैंने करी, तो मेरे को टिकट मिली है, तो मैंने कोर्ट में सबमिट करवाई हुई है। अभी 5-6 ईयर हो गए, अभी कुछ नहीं आया, उसका क्या करूँ? 5-6 साल हो गए हैं? हाँ, कुछ नहीं आया उसका। कहाँ की टिकट थी वो आपकी? वो ब्रम्पटन की है। ब्रैम्पटन की है? हाँ, गौरवे से थे, क्वार्टर में राइट किया मैंने, वहां नहीं देखो, करना था रेड लाइट में। 5-6 साल तो नहीं चलती है ना, बट कोविड के टाइम पे थिंग्स वर वेरी डिलेड। अभी तो नहीं है डिलेड। देर इज, आप ऐसे कर सकते हो, देर इज अ वे टू लुक अप योर टिकट ऑनलाइन, नहीं तो आप ब्रैम्पटन कोर्ट फोन करके उनका आप अपना टिकट का नंबर बता दो, उनको बोलो कि मेरी ये 5-6 साल की टिकट नहीं आई है, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने आपकी टिकट डिसमिस कर दी होनी है। पता नहीं, क्योंकि मेरी तो वो फर्स्ट थी, मेरे को कभी नहीं मिली टिकट। हाँ हाँ, वो तो नहीं, आप कोर्ट आप डालोगे ना ब्रैम्पटन POA कोर्ट करके डालना, तो कॉल देम, आस्क देम, आपके पास उनको कोई बोलो। नंबर है प्लीज? मैं नंबर आपको देख के दे देती हूँ।
हाँ, तब तक मैं बता दूं कि मैंने सर्वे का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो आप उसको जरूर भर दीजिएगा प्लीज, सब लोग। हाँ जी, आप नंबर लिख लीजिए 905 जी 450 4770। ठीक है। तो मैंने 3-4 बार किया उनको, बोलते हुए अभी तो कुछ भी नहीं शो कर रहा आपका। नहीं, आप फिर आप ऐसे करो, आप यू कैन लुक अप योर टिकट ऑनलाइन, अगर कहोगे तो मैं बाद में आई कैन टाइप इट आउट इन द मैसेज वन इफ आई एम एबल टू, नहीं तो मैं रिंटू जी को बता देती हूँ, शी कैन टाइप इट आउट। तो आप उस वेबसाइट पे जाके यू कैन लुक अप योर टिकट, तो उस पर दिख जाएगा क्या हुआ उसका आपको। अपना टिकट का एक कॉर्नर में ना, राइट कॉर्नर में नंबर होता है, वो डालना पड़ेगा, एंड देन यू विल गेट टू नो। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो वरीज। सो So we come to school zones. To ensure safety in school zones, drivers should slow down and obey posted speed limits. Pay close attention to their surroundings and be mindful of pedestrians, especially children crossing roads. Obeying crossing guards and avoiding distractions while driving are also crucial. So हमारे school zones में भी we have people standing there. Mostly there are seniors standing there volunteering as crossing guards to help children cross the road. So we should be mindful कि भी अगर वो रोक रहे हैं हमें with that stop sign, they're wearing all that proper gear to tell everybody that they are here for a reason. So we should be mindful of them, and we should always drive slow when crossing any school zones. So I'll tell you a very interesting thing. पहले अभी थोड़ी देर पहले ब्रैम्पटन के आसपास आपने देखे होंगे, सब जगह ही एक्चुअली लगे हुए थे दोज रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो आपकी फोटो खींचते थे स्पीडिंग की. They were around the school zones and they were around some community safety zones जहाँ पे आपकी वो if you're speeding तो आपकी फोटो खींच के बाहर आपके घर आ जाती थी. So now they have taken those out क्योंकि people have been vandalizing those things. वो ब्रैम्पटन का एक रे लॉसन एरिया, वहाँ पे पता नहीं बच्चों ने तोड़ा, पता नहीं किसने तोड़ा, वो सब they had destroyed that object and it had happened in very many other places too. तो अभी आप अगर स्कूल जोन्स क्रॉस करोगे यू विल सी कि उन्होंने वो वाले उठा दिए हैं वहां से बॉक्सेस विच वर टेकिंग पिक्चर्स. नाउ दे पुट दोस कैमरास, स्पीडिंग कैमरास ऊपर लगाए हैं उस पे ऑन द पोल्स, फेसिंग बोथ साइड्स वेयर जहाँ जहाँ से भी आ रहे आपकी फोटो खींची जाती है. सो आई हैड अ क्लाइंट सम टाइम बैक, मुझे कहता कि मैं तो गाड़ी तेज चलाता ही नहीं हूँ जी, मेरे को ये टिकट आई है, एक मेरे को देख के बताओ ये फोटो वाली टिकट है. ओके, आई टोल्ड हिम, आई सेड you'll have to fight these, जितने तो मैं पैसे लूंगी उतने तो आपको ये उतने ही होंगे पैसे, ये तो मेरा फायदा नहीं होएगा आपको. You do it yourself. So I told him, I said I'll look it up and tell you. When I pulled up his ticket, that one that's called a penalty notice, 4 और थे उसके साथ में, स्पीडिंग इन स्कूल जोन्स. सो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि व्हाट, मैं आपको आपको ईमेल कर रही हूँ, आप कहते तो आप स्पीडिंग नहीं करते हो, यू आर रिपीटेड ऑफेंडर इन स्कूल जोन्स. सो प्लीज बी माइंडफुल, अगर आप स्कूल जोन्स पे हो तो आपने ये नहीं सोचना उन्होंने बॉक्सेस उठा दिए वो वहां कैमरा पे. ऊपर कर दी। हाँ, वो ऊपर कर दिए हैं, अब उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, बस वो फोटो खींचेंगे आपकी, है ना. मैं एक तो फनी बात बताऊं, हमारे पास स्कूल है माउंट नैश, तो वो उसका कैमरा लगा हुआ था, तो पता नहीं किसने, जो भी था, बच्चों ने लगाया या बड़ों ने लगाया, उस पे टेप लगा गई, बस पूरी ना दोनों तरफ उसके टेपिंग कर दी, अच्छे से टेपिंग लगा दी, ताकि उसको कोई पिक्चर कोई ना देख सके यार. पिक्चर खींच ही तो ना बस ये इसीलिए उन्होंने सब चेंज कर दिया. सारे कैमरास ऊपर कर दिए अब। या द अदर पॉइंट, वो जो क्लाइंट मेरे को वाज ट्राइंग टू आर्ग्यू वाज, कहता वहां पे तो बॉक्सेस ही नहीं लगे जहां से मैंने क्रॉस करता हूँ. मैंने कहा तो ऐसे अभी जाओ वहां ऊपर देखो क्या लगा हुआ है. ये वहीं से फोटो खींची गई है आपकी. जी मीता जी। या बाइक लेन्स का बताओ पूर्वा, बाइक लेन्स में अगर हम चलाते तो वो कितना ऑफेंस है, क्या फाइन है उसका? नहीं, वो बाइक लेन या में ने कितनी, लिखा है इस बारे में? नहीं सी बाइक लेन में तो आप कितनी स्पीड कर लोगे, राइट. तो आप अगर 50 की जो स्पीड है, 50 पे तो चला भी नहीं सकोगे आप बाइक को, राइट. So unless and until it's a e-bike, तो like I told you, उनकी तो फोटो तो क्या खींची जानी है, but नहीं then if a नहीं, police officer stops you, you will get a ticket.
हाँ, मेरा मतलब ये था कि जैसे बाइक लेन्स पे लोग पार्किंग कर देते हैं या कुछ, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। या सो जैसे मैंने बताया कि आप कॉल करो सिटी, दे लुक इनटू इट राइट अवे। ओके। मैं ना पहले ब्रैम्पटन डाउनटाउन के एरिया में रहती थी, एंड आई यूज्ड टू बी अ रेगुलर वॉकिंग टेकिंग वॉक एट द गेज पार्क। हम्म। तो वहां पे एक दिन मैं गई तो जितने वो टाइम इनका होता है, टाइमिंग जो ये जितने फाउंटेन होते हैं ना, और वो बच्चों के लिए वो जो इन्होंने हाँ हाँ। एरिया बनाए होते हैं पानी वाले। यस यस। तो आफ्टर मैं आई वेंट अराउंड मे बी 9, 9:30, 10 o'clock के टाइम पे। आफ्टर 8 o'clock वो स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो वो लगातार एवरीथिंग वाज रनिंग। सो दीज 311 वाली जो सर्विसेज है ना, दे आर 24/7 अवेलेबल। आई कॉल देम अप, आई सेड ये आपका हो क्या रहा है, इट्स वेस्टेज ऑफ वाटर, राइट? कि भी ये चल रहा है, पानी चल रहा है, कोई यहाँ पे है ही नहीं है, इट इज लाइक ऑलमोस्ट 10 o'clock इन द नाइट। या तो कहती कि मैं अभी किसी को भेज रही हूँ, गोना लुक इनटू इट एंड वी गोना स्विच इट ऑफ। मेरे को लगता है पीछे से कोई स्विच ऑफ करके जाना भूल गया, कि इट्स यूजुअली डन ऑन ऑटोमेटिक, इट्स ऑन ऑटोमेटिक, बट आई थिंक मे बी सम इशू। सो आपको कुछ भी ऐसा दिखता है ना, यू कंप्लेन एंड इट विल बी टेकन केयर ऑफ। आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस वेयर दे हैव रिस्पॉन्डेड। आई नो विद सम थिंग्स सिटी के लिए there are certain things they don't really respond very quickly, but then they do look into these matters. जी प्रभा जी। थैंक यू। हाँ जी। मैं आप एक तो मैं यही कह रही हूँ, बहुत अच्छा नॉलेजेबल है, सब कुछ देख के सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ अच्छी आपने नॉलेजेस दिए। एक तो मुझे सिटी का आप कह रही थी नंबर दे दूंगी, क्योंकि रोड क्रॉस के लिए जो आप बटन होता है 311 पे कॉल करिए, आप 311 पे कॉल करिए। अच्छा they थ्री take वन वन all general they take all general calls, and then they divert your calls to wherever it is needed to be done. ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक आप इतनी सारी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए मैं आपको एक अपना लाइफ का इंसिडेंट बताती हूँ। कि हम लोग चाहे कितनी भी स्पीड पे चल रहे हो, हमने चाहे कोई भी गलती नहीं करी हो, लेकिन उसके बाद जो आगे वाला चल रहा है या पीछे वाला चल रहा है, हमें नहीं पता उसका क्या मूड है। अगर मूड की भी बात छोड़ दीजिए, क्या भाग्य में है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं इंडिया में थी उस समय, देहरादून जा रहे थे हम लोग, मेरा हस्बैंड एट वो मतलब कान पकड़ती हूँ, कभी उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ भगवान की दया से, अब तो खैर चलाना छोड़ दिया, इनकी आंखों में प्रॉब्लम आ गया। तो हम लोग बहुत अच्छे से जा रहे थे, रास्ते में जो आगे एक ट्रक जा रहा था, उसका चलते चलते टायर फेल हो गया, फट गया। टायर फट के वो जो आगे जा रहा था वो मुड़ के हमारी तरफ आ गया, मुड़ा, पूरा राउंड लिया उसने से राउंड, और हमारी तरफ चल के आने लगा। हम लोग पीछे पीछे गाड़ी करते रहे। सो हम लोगों को अगर बचना, ठीक से चलाना है तो चलाना ही चलाना है, दूसरों का भी देख के चलना है, वो कम मार दे। वो तो है इसलिए ही है ना। हमें इतनी तो अपना, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज मेरा बेटा अभी उसने लाइसेंस लिया है, एंड आई ऑलवेज टेल हिम व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाइल ड्राइविंग इज यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू नो कि भी अगर कुछ आसपास हो रहा है, अगर आप अपने आप को सेव कर सक रहे हो समहाउ, हाँ you हाँ should be able to do that, right? हाँ। You have to be really alert, and वो जो quick response होता है ना, that has to be हम्म। there, you know। या तो जैसे आपने कहा कि कंडीशन। आपने गाड़ी पीछे कर ली, तो you stopped, or you took, that was your call, कि आपने जो आपको बिल्कुल सेफ लगा, you did that, we cannot control या people on the road। um, but mostly यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपनी आगे अगर कोई कुछ करता है, अगर हम पीछे से मारते हैं उसमें गाड़ी, चाहे वो आगे वाला का फॉल्ट क्यों ना हो, वी आर ऑलवेज चार्जेस, रियर एंड जो करता है, दे आर एट फॉल्ट, even if you try and explain it to them। So yeah, you try हम्म to keep a distance। वो जब हम नई नई गाड़ी चलानी सीखते हैं या समझाते हैं हमें, वो दे टेल अस कि भी एक गाड़ी का बीच में फासला होना चाहिए जब हम गाड़ी चला रहे हैं। हम्म मोस्टली वी हम्म डोंट डू दैट। आजकल लोग क्या करते हैं, बिल्कुल वो जो पास 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 वाला काम है ना, उस हम्म। सीन में तो हम ब्रेक भी मार ले तो बीच में ही जाके लगेंगे ना लग हमसे, जाएगा, हाँ है बिल्कुल। ना। तो ट्राई टू कीप अ रीजनेबल डिस्टेंस की भी, अगर ये आगे वाला कोई ऐसी वैसी हरकत करता है, तो मे बी वी आर एबल टू सेव आवरसेल्फ समहाउ, राइट? तो जी। वी शुड डू दैट, राइट? कमलजीत जी, हमारे पास अभी सिर्फ 5 मिनट है, तो अगर पूर्वा जी का अभी वो खत्म होने वाला है, उसके बाद अगर आपका कमेंट ले लें, या क्वेश्चन है या कमेंट है जो भी है, तो हम क्वेश्चन ही है, पर वो हाँ, बाद में बस श्योर 5 मिनट है हमारे पास, तो वो कंप्लीट कर लें अपना। हाँ जी, बस ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा ही रह गया, बट वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट स्कूल जोन्स, दैट वी या हैव टू बी अलर्ट।
obey the crossing guards. अगर वो हमें stop sign दिखा रहे हैं, we should stop and then we should listen to them while letting children cross, क्योंकि it is more important that they cross safely, and we watch for pedestrians, um, be mindful of crosswalks and avoid passing stop school buses. So yeah, we need to be very careful when we are around school zones. The next one is driving in winter. So जैसे हमारे यहाँ पे स्नो कितनी होती है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल हाउ वी ड्राइव इन स्नो. ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमने तो जी विंटर टायर डलवा लिए, हमें तो हम बिल्कुल ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं. बट इट्स नॉट दैट वे, यू नो. even if you have winter tires and the best quality tires, अगर आप स्पीडिंग ही कर रहे हो and you are on the road, नहीं आप स्लो डाउन कर सके या ब्रेक मारिए, तो वो गाड़ियां कैसे टर्न करती हैं. एवरीबडी मस्ट हैव हैड अ लिटिल एक्सपीरियंस की स्नो में कैसे टर्न कर जाती हैं गाड़ियां. वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट वी ड्राइव सेफली. जैसे हम सोचते हैं कि भी हम पेडेस्ट्रियन है, वी हैव द राइट ऑफ वे. ऐसे नहीं सोचना है कि भी अगर हमने टायर डलवा लिए स्नो टायर्स तो हम तो सेफ ही हैं. बिल्कुल, इट्स नॉट दैट. अगर आप अनसेफ ड्राइविंग कर रहे हो तो चाहे वो जो मर्जी सेफ्टी आपने गैजेट्स लगवाए हो कार में, तो वो आपके अगर एक्सीडेंट होना है, आपने किसी को मारना है, हिट करना है, तो वो तो कर ही देना है. ठीक है ना. So these are small little things that you should keep in your car. अगर कहीं कार खराब हो जाए, you should have a little, you know, safety kit for yourself. Keeping in mind the weather, which is really cold. अगर खराब हो जाती है कार तो कोई शॉल या जैकेट सेपरेट, फ्लैश लाइट अगर आप रात में जा रहे हो. आई रेकमेंड कीपिंग दोज, जो हम अपने विंडशील्ड फ्लूइड जो है वो एक हमेशा एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने डाल लिया. पूरा एक जरूर एक्स्ट्रा होना चाहिए. कई बारी द ग्लास आइस इज सो मच, आपको मिनट मिनट बाद यूज करना पड़ता है, एंड इट बिकम्स अ प्रॉब्लम अगर हम गाड़ी की जो विंडशील्ड है वो साफ ही नहीं कर पा रहे. सो general rule for, you know, changing tires during, and you know, during the time when we are getting into the winters and getting out of winters, is कि अगर 7 डिग्री से नीचे जाने लग गया टेम्परेचर, then we, you know, we change it to our winter tires. नहीं तो हमारे दूसरे टायर खराब होने शुरू हो जाते हैं. एंड सेम एज when जब अब समर आ रही है एंड 7 से ऊपर या 8 9 जैसे 10 होना, अब रेगुलर उस पे टेम्परेचर 7 एंड अबव रहने लग गया, देन यू नो चेंज योर टायर्स फॉर टू कीप देम, यू नो, इंटैक्ट. नहीं तो वो खराब होने शुरू हो जाते हैं. व्हेन वी ड्राइव विद द विंटर टायर्स इन द समर सीजन, तो वो तो खराब होने शुरू हो जाते हैं. And especially for do not use cruise control when driving on any slippery or icy or snow conditions. So there are very many, you know, new cars जिनके cruise controls हैं, जो लोग की cruise control पे गाड़ी चलाते हैं set speed करके, and then, you know, so that should be avoided, to slip, and should always be safe when driving in winters. And आजकल वो तो टीवी पे भी कहते हैं, कारों की कितनी चोरियां होती हैं. यू नो, वी शुड नॉट कीप आवर कार अनअटेंडेड जब हम सुबह में गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कि भी ये गर्म हो जाए. वी शुड नॉट, यू नो, लीव इट अनअटेंडेड आउटसाइड. आजकल चोरियां इतनी हो रही है कारों की. वी शुड कीप दैट इन माइंड, एंड never warm up a vehicle in an enclosed area. It is not safe, and you know, those fumes that come out, they're not good for you. And they say that जब आप विंटर में आप अपना टैंक जो है ना, गैस टैंक, वो आधे से तो ऊपर ही होना चाहिए. ट्राई टू कीप इट एज, यू नो, फुल पे रखें, बट देन आधे से नीचे नहीं जाना चाहिए. वो आई हर्ड की हवा चली जाती है उसमें, यू नो, वो कुछ हो जाता है उसको, इंजन को. तो you keep an eye on your fuel tank when it's, you know, harsh winters में. You should, you know, your tank should always be more than half. So I believe this is one of the last ones. So driving with disabilities. So sometimes we as individuals, you know, कईयों को disabilities होती हैं, small or great in nature, but then with a medical review, they let you know if you are able to drive. And if you are able to drive, if they give you permission to drive, they give you those
पार्किंग परमिट्स जो आप लगाते हैं अपनी कार में, बिकॉज वी हैव स्पेशल designated spaces for individuals with disabilities to park, and we should be mindful of those people as well. And so driving with disability, they give you a medical review. Ontario drivers with a disability must undergo a medical review to be able to drive safely on the road here. This review assesses whether the disability significantly interferes with the ability to operate a vehicle. अगर आंखों में ज़्यादा problem है, अगर आंखों की ही issues हैं, तो you're not able to drive, right? If you're not able to see properly, then you're not able to drive. If you have some, कईयों को अपने यहाँ पे बोन्स की बहुत इश्यूज आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द वेदर, osteoporosis and all those kind of things, जिससे there are times when we are not able to move properly, अपनी legs, arms and hands and all that. So you need to get into a medical review before you start driving with any sort of disability. कई बार हमें लगता है कि नहीं ये छोटी सी चीज़ है, हम इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, but then I believe with as you age, any person, if you think that you have some sort of issues कि जिससे आपकी ड्राइविंग में कुछ issues आ सकते हैं, you should get yourself assessed and go through that process, because later on if somebody has an accident or run into an unsafe situation, and they get to know that you had some kind of disability which your doctor told you about and you did not do anything about it, तो फिर अब वो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है with you even getting your insurance and getting into anything. It's always recommended that go through proper channels and do what is needed to be done if you have any sort of disability. And as everybody knows, if we are not allowed to park on those spaces which are, designated for people with disabilities, if you have that kind of permit with you, you should always display it before you get, somebody catches you and gives you a ticket, and you're not, if you have a disability and you don't have the permit with you, so वो अपने पास जरूर रखें, so that you're able to, if somebody stops you for any reason, the police officer tries to, it's a huge fine. It's a more than $5,000 fine for that if you park in those areas and without a proper permit. So we've come to the end of our safety session, and these are few links that I have put in here, which gives you road and traffic safety tips. And the first one is from the City of Brampton website. The second one is the Transport Canada website. And the third one is the one that I was talking about, how to teach children road safety. Somebody earlier asked me a question. So this is a PDF file which can be downloaded for you on your computer, and you can have your child sit with you, go over with this. It's very nice with pictures and with proper information and everything. Not too much information, but it has a lot of information which you can share with your child. And the children should also, जैसे बच्चों को हम पढ़ना सिखाते हैं, we teach them how to read. ABC से जब शुरू करते हैं, phonetics सिखाते हैं, so then we also show them, we do picture reading with them. जैसे हम अपने cereal boxes या cookie boxes दिखाते हैं, तो बच्चे वो देख देख के उनको पता लग जाता है ये चीजें क्या हैं. वैसे ये जो हमारे रोड साइड पे साइंस हैं, अगर हम बच्चों के साथ कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं, कहीं कोई डिफरेंट साइन दिखता है, चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस. जब रास्ते में जाते हैं, आई रिमेम्बर व्हेन माय सन वाज स्मॉल, तो वी वर गोइंग फॉर अ ड्राइव, तो साइड पे ना एक साइन लगा हुआ था वेयर वो जिस साइन पे डियर इज ट्राइंग टू हॉप ऑन टू द रोड. सो he asked me a very innocent question. He goes कि ये इसको डियर को कैसे पता लगेगा मैंने यहीं से क्रॉस करना है ना. तो that was very sweet, and I believe children notice these things a lot कि भी क्या हो रहा है. So it's very important कि हम बच्चों को जैसे बाकी चीजें सिखाते हैं, रोड साइंस अगर हम कहीं ड्राइव करके भी जा रहे हैं, any different kind of a sign you see, वो भी उनको बताएं कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे है.
We should be mindful of those things, and children take a lot of interest in that. So with this particular link, you can go on and you can teach them road safety. And the second one is also for children. The last one, sorry, children's rules for biking and cycling. So these are two of the links that you can click on and have them sit with you and go over. And I think this is my contact information if anybody, ever needs to talk to me about any kind of issue. And I also provide legal services for landlord tenant board, small claims court, and I can always refer you to a lawyer if needed, if the matter needs to be attended by a lawyer. So this is my information. So इसकी आप फोटो भी खींच सकते हैं, this link that you have here, and you can go. आप अपनी स्लाइड भी दिखा दे, वो उसकी भी फोटो खींच सकते हैं, जिसको अगर कभी बात करनी हो तो वो कर सकते हैं आपसे बात। ठीक है जी, ये पहले खींच ले सब, अगर किसी ने खींचनी है तो, then we can move on to the next one. मैंने तो शेयर भी कर दी सबके साथ। चलो अच्छी बात है। इसका भला हो जाएगा, कोई बच जाएगा। सही बात है। I know it was a lot of information, but I hope you guys like the session. Excellent presentation. Thank you. So much knowledge, so much knowledge. हम स्लाइड शो बंद करके तो हम फुल गैलरी में आ जाते हैं, अगर आप बंद कर सकती हैं तो। थैंक यू सो मच। शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ जी।